do you see in this picture? A tree, a gorilla, a lion? Well, I'm not here to ask you any trick question. Rather, today we are going to talk about why we see so many different pictures here, or how are we able to see so many different pictures here. Hi everyone, I'm Rashali and this video is brought to you by PsychLogic. In this video, we are going to talk about perceptual segregation, depth perception, and the various cues involved in depth perception. We have talked about sensation and perception in our previous videos, the links of which are in the description box. Do check them out to have a deeper understanding of these topics. So, as we have discussed earlier, perception basically is how we make sense of all the sensations or inputs we are receiving from the environment through our sense organs. Now, perceptual segregation. Segregation means to separate, and perceptual segregation means how we are perceiving things after separating them. For example, at a railway station, you hear so many different sounds. Trains की sounds है, लोगों की sound है, they're chatting, you are chatting, कहीं music बज रहा है, कहीं announcement हो रही है. Among so many chaotic sounds, you are able to recognize the sound of the announcement that is being made for your train. Now, that is perceptual segregation. So, as your brain was able to perceive that sound separately, you paid attention towards it. And शायद आपकी train में सोने से बच गई. Now, in this perceptual segregation, there is a concept of figure-ground relationship. This concept is basically how we separate or we distinguish an object from the surrounding or from the background. So, we are perceiving a figure separately from the ground. To understand this even better, let's take help of the famous vase-face illusion. Now, look at this image. Now, as you can see, there are only two colors involved in this picture, black and white. And the illusion is that when you keep one color as a ground or a background, you see the image formed by the other color. जैसे अगर हम black color को background में रख रहे हैं, so we are able to see a different picture. That is, we are able to see two faces. And अगर यही हम white color को background में रख रहे हैं, तो हमें black color से जो image दिख रही है, जो figure दिख रही है, that is a vase. So this is the figure-ground relation. जब हम एक color को परसीव करें एज अ बैकग्राउंड तो हमें दूसरे कलर में जो इमेज बन रही है, जो फिगर बन रही है, वो क्लियरली परसीव हो रही है. नाउ सी दिस पिक्चर. व्हाट डू यू सी व्हेन देयर इज अ ब्लैक कलर इन द बैकग्राउंड? यस, यू सी एन एप्पल. But now if we keep the white color as a ground or a background, what do you see? The face of a man, right? Well, last one. What do you see here? The two images that you see are an elephant and an ostrich. So, जब भी हम एक कलर को यहाँ पे ग्राउंड की तरह परसीव कर रहे हैं बैकग्राउंड में, तो इमेज हमें दूसरे कलर में फॉर्म होती हुई अपने आप दिख रही है, राइट? अब हमारा ब्रेन ऐसे ही स्विच करता रहता है इन दोनों कलर्स के बीच में जो इमेजेस फॉर्म हो रही है उनको देखने के लिए. Now the question is, how is it important? हमें ये illusions थोड़ी daily life में use हो रही हैं. So how are we using this figure-ground relation in our daily lives? Well, अभी आप ये text read कर रहे हो, इसमें भी आप figure-ground relation use कर रहे हो. Because you are separating the letters from the background color. When you're driving, even then you're using figure-ground relation. As at that time, the figure means the vehicles on the road, the people on the road, and the ground is the road. So you are focusing on the ground, that's the road, to avoid all those figures. Before we move on to our next topic, don't forget to check out our WhatsApp, Telegram, and Instagram channel, as we'll keep you updated with all there is to know about psychology, along with the government notifications, various practice questions, internships and jobs vacancies, etc. And we are also providing detailed lecture notes for each of our videos, so do check them out. Okay, coming back to the topic. Now what do you see on the screen? A plain, simple black and white checkerboard, right? Oh, now this changed. But change हुआ क्या इसके अंदर? अब इस प्लेन से चेकर बोर्ड के अंदर कुछ सर्कुलर इमेजेस भी फॉर्म हो रही हैं, राइट? अब ये कैसा इल्यूजन है? ये कैसे हमें दिख रहा है? वेल, इफ यू लुक एट दिस इमेज क्लोजली, चेक्स अभी भी है इस इमेज में, बट द साइज ऑफ द चेक्स आर चेंजिंग. एंड इन चेक्स के साइज के कारण हमें पता चल रहा है कि ये थोड़ा 3D इमेज है. Like here the size of the check is bigger than this side.
So therefore, we are able to see this circular image. And in this image, the size of the checks are same, but the placement of the checks has changed. जैसे यहाँ पे checks different angles पे हमें दिख रहे हैं, because of which हमें यहाँ पे कुछ boxes पड़े हुए दिख रहे हैं. Now this concept is called depth perception. हमने ये perceive कर लिया कि यहाँ पे 2D image नहीं है, यहाँ पे plain checks नहीं है. There is something deeper to it. There is some 3D image being formed here. Depth perception हमारी ability है ये perceive करने की कि कोई चीज 3D में कैसे है. Because of this ability of depth perception, we are able to see the world in a 3D form rather than a 2D form. अब आप इस staircase को देखिए. क्या हम यहाँ staircase के टॉप पे खड़े हैं या बॉटम पे खड़े हैं? Yes, we are standing on the top. अब ये हमें कैसे पता कि ये टॉप पे है? Because जो stairs यहाँ क्लोजली दिख रही है वो बहुत बड़ी है साइज में, एंड सेंटर में जो हमें स्टेयर्स दिख रही है वो बहुत छोटी है. सो इससे हमने परसीव कर लिया कि जो चीज हमें बड़ी दिख रही है साइज में, दैट इज क्लोज टू अस, एंड जो चीज हमें छोटी दिख रही है साइज में, दैट इज फर्दर अवे. So this is exactly what we understand in depth perception, the nearness or the farness of the thing or the object from us. And ये हम सिर्फ और सिर्फ अपनी eyes से पता करते हैं. And there are various cues involved in depth perception. There are monocular cues and binocular cues. Monocular cues, as the word says, mono means one and bi means two. In monocular cues, you're using just one eye, and in binocular cues, you're using both the eyes to perceive the depth. Now let's begin with the monocular cues. The first is motion parallax. Now motion means moving. So this cue is only when we are in motion. अब आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए. जो हमारे पास में चीजें जो हमें साइज में बहुत बड़ी दिख रही हैं, these are very close to us, right? ये तो बहुत जल्दी मूव कर रही हैं. But the things that are further away, जैसे वो mountains, वो तो बहुत धीरे मूव कर रहे हैं, right? So motion parallax suggests कि जो भी चीजें हमारे पास में है, they move very fast as compared to जो चीजें हमसे दूर है, जैसे वो mountains. They are moving very slowly. एंड अगर हम बीच में कहीं किसी ऑब्जेक्ट को ध्यान से देखें तो हमें ऐसा लगता है कि जो हमसे दूर है चीजें, जैसे वो माउंटेन्स, वो हमारे ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, एंड जो चीजें हमारे पास में हैं, जैसे ये ट्रीज, ये हमसे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. नेक्स्ट कम्स इंटरपोजिशन. नाउ द वर्ड इंटर मीन्स in between. So when something is in between you and the object that you're trying to see, that is where this cue comes into play. अब अगर आप कोई ऑब्जेक्ट जैसे ये कार देखने की कोशिश करो, so this man is standing in between your eyes in the car. अब क्योंकि वो कार आपको पार्शियली दिख नहीं रही है एंड ये मैन कंप्लीट इमेज में दिख रहा है आपको, that's why you know that this man is standing in between the car and your eyes. Next is aerial perspective. Now this cue suggests कि हमें जो चीजें पास है वो बहुत क्लियरली दिखती हैं, एंड जो चीजें हमसे बहुत दूर है वो बहुत हेजी और अनक्लियर या ब्लर्ड दिखती हैं, जैसे वो दूर वाले माउंटेन्स हमें बहुत ब्लर्ड दिख रहे हैं. अब आप देख रहे हो यहाँ पे कोई भी चीज जो हमारे पास है वो बहुत zoomed in है, एंड कोई भी चीज जो हमसे दूर है वो बहुत छोटी, ब्लर्ड और मिलती हुई दिख रही है, जैसे कि ये रेलवे ट्रैक की लाइंस. This is our next cue, that is linear perspective, which suggests कि अगर कोई भी parallel lines हैं, वो बहुत दूर के पॉइंट पे हमें ऐसा लगता है कि ये मीट कर रही है कहीं पे, जबकि actually they are not meeting. Next comes relative size. Well, इस क्यू को हमने अभी बाकी सारे क्यूज के अंदर भी यूज किया है. This suggests कि जो भी चीजें हमारे पास में है वो बहुत बिग लगती हैं हमें साइज में as compared to जो चीजें हमसे दूर हैं, even though their size is the same. जैसे अब ये 3 बॉल्स हमारे स्क्रीन पे हैं, अब क्योंकि ये लेफ्ट बॉल हमारे पास में है, दिस सीम्स बिग टू अस एज कम्पेयर टू द अदर बॉल्स, जबकि ये तीनों सेम है. द नेक्स्ट कम्स टेक्सचर ग्रेडियंट. टेक्सचर मीन्स द डिटेल्स ऑन द थिंग बेसिकली, जैसे पेबल्स, ग्रास, ब्रिक्स, एनीथिंग. नाउ ऑन द स्क्रीन यू आर एबल टू सी 3 डिफरेंट टेक्सचर्स. अब जो एरिया हमारे बहुत पास में है, वी आर एबल टू सी द डिटेल्स ऑफ दैट थिंग, लाइक दीज रॉक्स. एक स्ट्रैंड दिख रहा है हमें ग्रास का, ये सैंड में जो लाइंस है वो दिख रही है. बट जहाँ ये दूर का एरिया हम देख रहे हैं, वी आर नॉट एबल टू सी दीज डिटेल्स. जैसे ग्रास एक लश ग्रीन कलर के एरिया में कन्वर्ट हो रही है, एंड जो सैंड है वो भी बहुत प्लेन मस्टर्ड सा कलर दिख रहा है हमें बस.
So concluding all of these cues, यहाँ पे हम क्या perceive कर रहे हैं? The depth of a thing, the nearness or the farness of that thing. कोई चीज हमारी अगर पास में है या हमसे दूर है, वो हमें कैसे पता चल रहा है? हमें उसकी साइज से पता चल रहा है, उसके ऊपर की टेक्सचर्स से पता चल रहा है. अगर कोई चीज उसे ओवरलैप कर रही है, हमें उससे पता चल रहा है. So we are using all of these various cues to understand कि कोई चीज हमारे पास में है या हमसे दूर है. And remember, अभी तक यहाँ पे जो भी हमने cues पढ़े, ये सिर्फ एक आई इन्वॉल्व करके थे. मतलब यहाँ पे दोनों आईज का कोई सेपरेट या कोई यूनिक फंक्शन नहीं है. Now when we are talking about binocular cues, now as I already told you, bi means two. So यहाँ पे हम अपनी दोनों आईज को कैसे यूज कर रहे हैं डेप्थ को परसीव करने में. Now to understand this, I request you to put a hand on your right eye and look at the screen. Now you can remove that hand. Now cover your left eye with your hand and look at the screen. Now you can remove both the hands. Now look at the screen. कुछ फर्क लगा आपको? Now both of our eyes do not perceive the same thing as one. They see the world from different angles. अब ये जो प्लेसमेंट है हमारे आईज की, उसके बीच में ये जो नोज आ रहा है, that is creating the eyes to perceive the world from different angles. जैसे हमने लेफ्ट आई से देखा तो हमें स्क्रीन डिफरेंटली दिखा than from the right eye. Now, what our brain does is it combines these two images as one, and that is how we are able to see the world in 3D. So right here we talked about our first cue, that is retinal disparity. Now retinal means on the retina. Now retina is the part of the eye on which the image is formed, जहाँ से हम actually image को देखते हैं. And disparity is difference. So this cue talks about the different images that are formed on both of our retinas, left and right. अब इसी चीज को हम यूज करते हैं 3D movies देखने में. Like you can see in this picture, this is a 3D glass. Now as you can see that the 3D glass has two different colors for the two lenses. जो red glass है वो left eye के लिए बना है, where there is a different set of images that are only to be perceived from that red lens. क्योंकि वो एक different angle से play हो रही है मूवी वहाँ पे. Then वो मूवी जो right eye के लिए बनी है, which you will see from the blue lens. So now we are able to see the same movie from two different lenses, and जब ये दोनों अलग-अलग movies को हम दोनों अलग-अलग lenses से देखते हैं, जो different angles से हम देख रहे हैं, तो हमारा brain उसको एक particular movie की तरह देखता है, and thus we are able to see it in 3D. जैसे हम actually किसी चीज को देख रहे हैं, यहाँ पे ये same concept को use किया गया है. Now let's do an eye exercise. Now use your index finger. Keep it in front of you and bring it closer to your nose slowly. Okay, now you can relax. So, did you observe something? जब आप अपने finger पे focus कर रहे थे, तो आपकी eye की movement भी change हो रही थी. This is our next cue, that is convergence. Now, convergence means to come close. So, जब भी हम किसी चीज को perceive करने की कोशिश करते हैं जो हमारे पास में है, तब हमारी eyeballs एक साथ converge हो जाती हैं. They converge inwards. And जब हम कोई भी चीज जो हमसे बहुत दूर है उसको देख रहे हैं, so हमारी eyeballs straight ही देख रही हैं, तब converge नहीं हो रही हैं. So that's it for today. You can click on the link given in the description box to get access to your free lecture notes, which are prepared in detail for you to ace your exams. Don't forget to join us on WhatsApp, Instagram, Telegram, and YouTube, of course, as we are dedicated to complete the course before your exams. Stay tuned. Happy learning!